Hello, dear listeners. I am Sakshi Chandrakar and I am here to present you a short video on the topic motion. So basically, the topic motion is belongs from physics subject. Okay. So here I want to tell you what is physics first. Okay. Yes. So what is physics? Physics is a study dealing with natural phenomena. That means physics is a study of natural phenomenon. Now what is natural phenomenon? For example, light coming from sun is a natural phenomenon because no one comes to give light from sun to earth. ठीक है, it is natural thing. Next example is fruits falling from tree. ठीक है, एक ट्री से अगर कोई फ्रूट गिर रहा है तो वो क्या होता है, एक नेचुरल फिनोमिनन है, कोई ऊपर से छोड़ने नहीं आता है उसको. ओके. नाउ साउंड कमिंग फ्रॉम अ सोर्स, दिस ऑल आर नेचुरल फिनोमिनन. ओके. सो हियर what is physics now? Study dealing with natural phenomenon is physics. Next, what is physical quantities? Okay, what is physical quantities? Physical quantities are of two types. First is scalar, second is vector. Okay, so what is scalar quantity? Scalar quantities are those who have only magnitude. Okay, magnitude. Now what is magnitude? What is magnitude? What is magnitude? Magnitude means numerical values. Numerical values. If some object have numerical value, then this is called its magnitude. Okay. For example, if we are talking about speed, okay, speed. So we will say a speed of some object is 5 km per hour. ठीक है, 5 km per hour. So 5 is a numerical value, so we can say 5 is magnitude of the speed. Clear? Okay. Now what is vector quantity? What is vector quantity? Vector quantities are those who have both magnitude as well as direction. ठीक है, जिसमें मैग्नीट्यूड मतलब कि न्यूमेरिकल वैल्यूज़ भी हो एंड हैव सम डायरेक्शन, उसको कोई एक डायरेक्शन भी डिक्लेयर्ड हो, देन दोज क्वांटिटीज विल कॉल वेक्टर्स. ओके, वेक्टर्स. नाउ व्हाट आर द एग्जांपल ऑफ वेक्टर क्वांटिटी? इफ वी आर गोइंग अवर होम टू स्कूल, ठीक है, दिस इज़ योर होम and this is your school. So you are covering some distance from here to here, so distance will be magnitude. Like let your home to school distance is 5 kilometer. ठीक है, 5 kilometer, and this distance will also have direction, like this is in east direction. ठीक है, east direction. Then we can say this is a vector quantity. Clear? Okay, so here we came to know about scalar quantities and vector quantities. Now next, now here we will study about motion. What is motion? ठीक है, what is motion? A body is said to be in motion when it change its position with respect to time. Okay, a body is said to be in motion. A body is said to be in motion when it changes its position with respect to time. टाइम के अकॉर्डिंग, टाइम के साथ साथ अगर किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज होती है, देन वी विल से दिस ऑब्जेक्ट इज इन मोशन. लाइक दिस कार इज स्टैंडिंग हियर एंड आफ्टर 5 सेकेंड इट रीचेस हियर. ठीक है, कोई कार यहाँ खड़ी है, फिर आफ्टर 5 सेकेंड इट रीचेस हियर. सो दिस कार चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. So here the motion is
The motion is, it changes its position with respect to time. Okay. Now motion is relative with respect to observer. What is it means? कि मोशन जो है वो ऑब्जर्वर पे डिपेंड करता है. व्हाट इज इट मीन्स? एट द सेम टाइम यू कैन बी इन मोशन एंड यू कैन ऑल्सो बी इन रेस्ट पोजिशन. हाउ कैन यू बी इन बोथ द पोजिशन एट द सेम टाइम? आई एम गिविंग यू वन एग्जाम्पल. ओके, you are traveling in a bus. Okay, suppose you are traveling in a bus and here is your mother जो आपको स्कूल बस के पास में छोड़ने आई है. ओके, एंड यू आर सिटिंग विथ योर फ्रेंड इन दिस बस, in your school bus. Okay, so when the bus start running from here, you are in motion with respect to your mother. ठीक है, आप अपनी मदर के रिस्पेक्ट में क्या होंगे? मोशन में होंगे. एट द सेम टाइम यू विल बी इन रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू योर फ्रेंड. अपने फ्रेंड के रिस्पेक्ट में आप क्या रहेंगे? रेस्ट पोजिशन पे रहेंगे. सो दिस इज हाउ अ मोशन इज रिलेटिव विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर. ओके, यस. नेक्स्ट, a body is said to be in rest. A body is said to be in rest when a body doesn't change its position with respect to time. जब बॉडी टाइम के रिस्पेक्ट में अपना पोजीशन चेंज नहीं करती है तो वो क्या होती है? रेस्ट पोजीशन में होती है. ओके, नाउ नेक्स्ट, मोशन. when we say any object is in motion when body does change its position with respect to time. जब वो टाइम के साथ में अपने पोजीशन को कंटिन्यूसली चेंज करते रहता है, then we will say the body is in motion. Okay, next, types of motion. Now here we are going to know about what are the types of motion. ठीक है, linear motion. Linear motion is one dimension motion or we can say a straight line motion. कैसा motion? Straight line motion. Like this runner running on the track, train running on the track. These all are linear motion. Now circulatory motion. The motion that are in circular motion, like this fan following a circular path is called circulatory motion. Next is oscillatory motion. What is oscillatory motion? When the movement of a body following to and fro motion. Now what is true motion? You have seen a pendulum. Okay, pendulum कैसे होता है? पहले यहाँ, then here, here, here. So if it moves forward, then it is a to motion, and when it come back, it is a fro motion. So if some body moves like this to and fro position, then it will call oscillatory motion. Okay. Now next, what is distance and what is displacement? ठीक है, सुनने में ऐसा लगता है कि दोनों ही क्वांटिटीज़ क्या हैं? सेम है, बट हियर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन दैम. डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस होता है? ओके, सो फर्स्ट वी हैव टू नो अबाउट डिस्टेंस. व्हाट इज डिस्टेंस? डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ. ठीक है, एक्चुअल पाथ विच कवर द लेंथ, एक्चुअल लेंथ इज कॉल्ड डिस्टेंस. ठीक है, अगर हम कोई ट्रैवल कर रहे हैं, किसी पाथ को कवर कर रहे हैं, तो एक्चुअल लेंथ को क्या बोलेंगे? एक्चुअल लेंथ विल बी कॉल्ड डिस्टेंस. बट व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट इज distance between final position and initial position. Okay, the shortest distance between initial position and final position is called displacement. Okay, okay, if we start running from this home to this direction, ठीक है, if we start running from here and we are following this path, then the length between this home to this home will call distance. Okay, distance. Like this is 5 meter, this is 10 meter, this again 5 and this again 10. Then what will be the distance from home A to home B? 5 plus 10 plus 5 plus 10, 30. 30 meter will be the distance. But here to here, this is the shortest path,
है ना, and shortest path is called displacement. So if the shortest path is 10 meter, then this will call displacement from A to B. Now here is the next topic, speed and velocity. Speed and velocity. Now what is speed? Speed shows the rate of change of motion. Rate of change of motion. Now rate, जहाँ पर भी rate बोले, okay, if कहीं पर भी rate आता है, then the meaning of rate is divided by time. ठीक है, divided by time. एंड चेंज ऑफ मोशन, अब मोशन में एक डिस्टेंस, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे आप अपना पोजीशन चेंज कर रहे हैं, तो व्हाट विल बी द चेंज इन पोजीशन? दिस इज कॉल्ड डिस्टेंस. ओके, सो स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. डिस्टेंस कवर्ड इन अ यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड. ओके, नाउ व्हाट इज वेलोसिटी? Velocity shows the rate of change of motion along with direction, or we can say velocity is what? Speed with direction is called velocity. ऐसा speed जिसका कोई direction हो, then it will call velocity. Okay, speed with direction is called velocity. So we can say velocity is equals to distance upon time. Distance upon time. This will be velocity. Okay, these are all from my side. Thank you.